Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Cantab Publishers video lessons. Before starting the lesson, dear students, you must have with you class 6 English textbook. We are going to start our lesson from unit 4, 8th October 2005. SLOs of this lesson are: read silently with comprehension and extract main idea and supporting detail. Comprehend text by applying critical thinking. Deduce meaning of difficult words from context. In this lesson, we are going to read the text of this unit for 8th October 2005. This is about an earthquake. This natural disaster here happened in 2005, 8th October. We are going to discuss it and know about the things that happen due to this natural disaster, due to this earthquake. Let's have a warm-up activity here. What is a natural disaster? When earth changes its form, when there is a change in earth, the disaster happens. Name some natural disasters. Okay, what are the natural disasters? Storm, flood, hurricane, tornado, earthquake, blizzard. blizzard उसको कहते हैं जो बर्फ का तूफान आता है. तो ये सारे क्या है? हमारे नेचुरल डिजास्टर है. मैं आपको फर्क भी समझा दूं नेचुरल और मेन मेड डिजास्टर में, तो क्या आपको पता हो? मेन मेड डिजास्टर वो होते हैं जैसे कहीं पर ब्लास्ट हो गया, आग लग गई, जो कार्गोस जो होते हैं शिप्स पे, सामान जो होता है वो डूब जाता है समंदर में. उससे क्या है? समंदरी जिंदगियों को नुकसान पहुंचता है. तो ये क्या है? सारा मेन मेड डिजास्टर है. और ये जो आपके हैं ये सारे नेचुरल डिजास्टर हैं. ब्लिजर्ड हो गया, टोर्नेडो हो गया, अर्थक्वेक, स्टॉर्म, फ्लड, ह्यूरिकेन, ये सारे आपके नेचुरल डिजास्टर हैं. जब आपकी अर्थ में चेंज आता है, बदलती है जमीन, तो क्या होता है? डिजास्टर हो जाता है, जो इन शक्लों में होता है जो मैंने आपको भी बताई. इसमें आपका सुनामी भी आ सकता है. नाउ लेट्स स्टार्ट. रीड द टेक्स्ट हियर. Paragraph 1 here. An earthquake is the shaking of the surface of the earth, resulting from the sudden release of energy inside the earth. Earthquakes can range in size from those that are so weak that cannot be felt to those violent enough to toss people around and destroy a whole city. Violent, zalim, shadid. To toss people, लोगों को गिरा दे, मार दे और पूरे के पूरे सिटी तबाह कर दे. This paragraph says that earthquake is the shaking of the surface of the earth. When earth shake, it is called an earthquake, and which results in release the energy inside the earth. And weak things and objects cannot tolerate it. They just collapse and happen like this. You can see the picture here. The earthquake can destroy the whole cities or to toss people like objects. Due to earthquake, you can see the damages here. Now let's move to the second paragraph here. On the morning of 8th October 2005, Asad Khan, 17 years old boy, was sleeping after having sahri in his coat in the lawn of his house in Muzaffarabad. Coat here means the small bed type, like a sheet in which a person sleeps. When suddenly the earth beneath started shaking, there was a loud sound amid merciless jolts and was eventually tossed onto the floor while his house caved in. Amid mercilessly, when something
happened during the excitement or fear due to mercilessly बेरहमाना तरीके से चीजें आपस में टकराई. द फ्लोर वॉज शेकिंग while his house caved in. एक गार की तरह उसका घर बन गया, बंद हो गया बिल्कुल. पूरी बिल्डिंग कोलैप्स होने से घर का बिल्कुल केव की तरह बन गया. In this paragraph we discuss a boy 17 years old, Asad Khan, on the morning of 8th October 2000. He was sleeping in his lawn having sahri, and when suddenly the floor was starting to shake and there was a loud sound he can hear. Jolts कहते हैं झटके से. Mercilessly झटकों से बेरहमाना तरीके से घर का फर्श हिलने लगा और क्या कर दिया, थोड़ी ही देर में उसका घर ढेर बन गया, केव की तरह बन गया देखते ही देखते. Now let's move to the third paragraph here. When he managed to rise his feet, everything was engulfed by clouds of dust coming from the mountains across the river. Engulfed छुपा हुआ था किस चीज से? Clouds of dust से. The clouds of dirt completely blemished visibility and people were unable to see anything in front of them, let alone at a distance for quite some time. Blemished जब आपको कोई चीज क्लियर ना हो, not clear. Blemished उसे कहते हैं जब हर चीज धुंधली हो जाए, ब्लर हो जाए. ब्लर किस वजह से थी? डस्ट की वजह से थी. सारी इमारतें जब एक साथ गिर गईं झटके से, अर्थक्वेक के, तो क्या हो गया? डस्ट ही डस्ट आ गया. When the dust settled, the survivors rushed to look forward their dear ones buried beneath the fallen buildings. Almost all the buildings in Muzaffarabad were reduced to rubbles. Rubbles, patthar, leaving almost all the residents either dead or wounded. Asad Khan, infant nephew, died while the adults inside the house were injured. Infant बहुत छोटा, जो अभी पैदा हुआ हो बिल्कुल. But next door the fatalities were higher, particularly in the school in his neighborhood. Fatalities, amwat, halakatein. In this paragraph we discuss how everything collapsed and turned into a disaster here. The boy Asad managed to stand on his feet and he just saw the clouds of dust and coming from the mountain across the river, the clouds of dirt completely blemished. Everything was blurred. He cannot see due to dust. The visibility, and the people were unable to see anything in front of them. They can't see anything because there was dust and rubbles everywhere. The people were buried beneath the fallen buildings. Almost all the buildings in Muzaffarabad were reduced to rubble. पत्थरों में तब्दील हो गई, गिरकर, टूटकर. एंड द रेजिडेंट, वहां के रहने वाले ज्यादातर या तो जख्मी हो गए या मर गए. असद खान का जो छोटा भतीजा था वो उसी वक्त मर गया, और जो बाकी बड़े लोग थे, एडल्ट्स, बड़े लोग जो थे, वो क्या घर के अंदर जख्मी थे. लेकिन उनके जो अगले नेबरहुड में और जो स्कूल था साथ में, वहां पर ज्यादा हलाकतें हुई थी. नाउ लुक हियर on page number 39. The survivors in Asad Khan's family ran towards the school to check on Asad's younger brother and sister who studied in the same school, but when they reached there, they saw only death and destruction everywhere. Most of the children, including Asad's younger brother and sister, were trapped under the rubble. Everyone was desperately trying to rescue them, but they didn't have the tools. Trapped, फंसे हुए थे. The survivors, जो लोग बच गए थे, जिंदा बच गए थे, वो क्या कर रहे थे? They ran towards the school to check on Asad siblings who studies in the same school, but they couldn't saw anything there. There was only destruction and death, and the people were injured, and most of the children and the Asad younger brother and sister were trapped. They were stuck under the rubble. They can't get away with it. Everyone was desperately कहते हैं मायूसी से, खौफ से, किसी चीज का इंतजार करना या किसी चीज को कोशिश करना करने की. They were desperately rescue, बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पास क्या थे? टूल्स नहीं थे उनको बचाने के. बड़े बड़े पत्थरों को उठाने के लिए क्रेन्स वगैरह की जरूरत पड़ती है, ट्रैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, तो वो उनके पास नहीं थे.
क्योंकि इतने बड़े पत्थरों को और दीवारों को उठाना सिर्फ लोगों का काम नहीं होता, इसके लिए हमें बड़ी बड़ी क्रेन्स और ट्रैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। Students, we will continue this unit in our next lesson too. I want you to read the next paragraph in advance. So, we will discuss it in the next lesson. And what we have read in this lesson? We read about the natural disaster, some natural disasters, and the earthquake of 8th October 2005, how it happened, so many deaths and injuries we can see due to this earthquake here in Muzaffarabad. The buildings turned into the piles of rubbles and the lots of people died in that earthquake. In next lesson, we are going to find what should we do before an earthquake, during earthquake and after earthquake. I want you to read these paragraphs in advance. Now let's move to the exercise here. We will do the first 3 questions from the text we have just read now. Read out the text and answer the following question. Do you think that earthquakes are scary? क्या आप सोचते हैं कि जो ज़लज़ले हैं, जो earthquake हैं, scary हैं, डरा देने वाले हैं? You have to give your opinion. Yes, obviously it's very scary. It's very scary to see the earth shaken and see the buildings collapsing. टकरा जो जाती हैं, गिर जो जाती हैं, उनको collapse कहते हैं. The second one, why is a doorway safe place during an earthquake? Earthquake के दौरान दरवाजे की तरफ भागना क्यों सेफ होता है? क्योंकि आप किसी बिल्डिंग के नीचे आने से बच सकते हैं. Is it safe? Because of this you will not be trapped in the pile of rubbles. आप पत्थरों के दरमियान दीवार के नीचे ट्रैप नहीं हो सकते. तो दरवाजे से जाना इसलिए जरूरी होता है कि आप किसी चीज के नीचे आकर दब के मर ना जाएं. The third one here, what are some other safe places during an earthquake? और कौन सी सेफ जगहें हैं जहां हम अर्थक्वेक के दौरान जा सकते हैं? जैसे कि खुला मैदान हो गया, वहां पर कोई बिल्डिंग नहीं होती, कोई चीज आपके ऊपर नहीं गिर सकती. तो यू कैन से लाइक दैट सम अदर सेफ प्लेसेस लाइक प्लेग्राउंड, ओपन एरियाज. वी कैन गो टू दीज प्लेसेस टू कीप आवर सेल्फ सेफ ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. यू कैन आंसर टू दिस क्वेश्चन लाइक दैट. आई होप कि आप अपना होमवर्क जरूर करेंगे. ये आपका होमवर्क है. आपने इन सवालात के जवाबात उसी तरह लिखना है जिस तरह मैंने आपको गाइड किया है, और हम अपना ये लेसन कंटिन्यू करेंगे. हमने अर्थक्वेक ज़लज़ले के बारे में आज पढ़ा कि ज़लज़ला क्या होता है, किस तरह आता है, और मुजफ्फराबाद में जब 8 अक्टूबर 2005 में जब ज़लज़ला आया था तो उससे क्या क्या नुकसान हुए थे, हमने उसके बारे में भी पढ़ा. अपने नेक्स्ट लेसन में ये पढ़ना है कि हमें ज़लज़ले से पहले, ज़लज़ले के दौरान और ज़लज़ले के बाद कौन सी चीज़ें करनी चाहिए ताकि हम सेफ रह सकें. आई होप कि आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे. थैंक यू.